Well, warm good evening, everyone. नहीं किया है. आज का जो topic है is very important and very essential because we have chosen to challenge tobacco affecting women. Those women who are exposed to second-hand smoke and third-hand smoke and tobacco spit and all forms of menaces from tobacco, but are silently suffering without any word. And I'm very proud that today we are all sharing dice with such powerful and strong, influential leaders of the country who have really proved that with meticulousness and dexterity, it is possible to bring in lot of changes. हमारे सामने एक ऐसे अनोखे उदाहरण है आज जिनके साथ हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार एक छोटी सी बदलाव, एक छोटा सा परिवर्तन बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, एक क्रांति की शुरुआत कर सकता है. राइट नाउ आई विल जस्ट टेक द सेशन अहेड विद अ पोल क्वेश्चन. हम ये जानेंगे हमारे यहाँ के ऑडियंस से कि यहाँ पे एक यंग लेडी है हु गेट्स मैरिड एंड कम्स टू नो टोबैको यूज ऑफ अ पार्टनर की जिसके बारे में उसे पहले नहीं पता था. तो उसे क्या करना चाहिए? शुड शी एक्सेप्ट हर फेथ? उसे खुद स्टार्ट कर देना चाहिए, ऑब्जेक्ट टू इट, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, उस पर्सन से मतलब रिश्ता तोड़ देना चाहिए, या फिर उसे एनकरेज करना चाहिए कि वो इस आदत को छोड़े और एक स्पेशलिस्ट हेल्प ले? आपकी स्क्रीन पे एक पोल क्वेश्चन दिख रही है, आपको जल्दी से एक ऑप्शन चूज करना है और वी विल डिस्प्ले द रिजल्ट्स. जैसा मुझे दिख रहा है कि 100% लोग यही कर रहे हैं कि एनकरेज करें और अपने पार्टनर को प्रोत्साहित करें कि कि अपने इस हैबिट को छोड़ें. ओके मैं देख पा रही हूँ कि 95% महिलाओं ने ये कहा है कि एनकरेज करना चाहिए और बहुत ही सही बात है. अब जो है मैं एडवोकेट पूर्णिमा आर पंडा जी को इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो आए और शी इज द मेंबर ऑफ द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स इन चाइल्ड वेलफेयर कमिटी. आई इनवाइट मैम ऑन द डायस टू टॉक अबाउट कि किस प्रकार ये एक टॉर्चर है, एक बोथ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर है फॉर वुमेन. व्हाट इज द लीगल राइट फॉर वुमेन टू टॉक अगेंस्ट टोबैको अब्यूज एंड शादी से पहले उन्हें क्या राइट्स मिले हैं ताकि वो इस बारे में कुछ एक्शन ले पाए या कुछ कर पाए. मैम, आई इनवाइट यू नाउ ऑन द बोर्ड. Good evening, everyone. It is a privilege for me to be part of this program. And the question is very interesting. So now I would like to answer to this question because there are so many options and people sometimes may choose only one. But for me, there are actually two options we need to choose. I at least choose. That is, the first one is object to it. And the second is encourage him to quit and seek specialist help. कोई भी चीजों को यदि हम डिसलाइक करते हैं, यदि हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, देन सॉल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड. जहां पर ऑब्जेक्शन होगा वहीं से हम सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. फॉर दिस आई वुड लाइक टू से she should object to it first and then force him to quit in a stipulated part time, or there should be a specific time duration. Then it still doesn't work, then take him to a de-addiction specialist for consultation and treatment or therapy. So most smokers who try to quit are not successful on the first try. We know that. So sometimes he may need to go for treatment and therapy for more than one time. In this case, I would like to say, if you just can give some time as much as possible for you as per the situation, so give the time to your partner for the de-addiction treatment or therapy. And then finally, if nothing works, then here I would like to say, no woman should be a rehabilitation center for badly raised men. And it's not her job always to fix him, change him, parent or raise him. She may need a partner, but not a project for lifetime. Actually, we all need a partner, but not a project for lifetime. Thank you. Ma'am, we had one more question कि legal rights क्या है women के पास. So if you can please enlighten our audience about it कि किस प्रकार से वो अपने rights को exercise करके they can save themselves or maybe take some actions against their partners in order to help them quit. Yes, actually, right of a girl who on marriage comes to know about the tobacco habit of the boy, आपका ये question था, उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगी right and protection as per the law what is there. So when a woman is married, she acquired the right to live in her husband's home, and this right is also protected under the Domestic Violence Act 2005. The act gives women the right to live a life free from violence. So free from violence is, I want to stress on it. So violence is what? The violence under Domestic Violence Act includes physical, emotional, sexual, and economic violence. So using tobacco or any other substance at home is not an offense per se, that we all know. So, but causing violence due to the use of substance
to wife can be covered by DV Act. A lady can approach to any appropriate court for her protection. क्योंकि कई बार हमने देखा है जब सब्सटेंस यूज करते हैं पार्टनर, सिर्फ उसके साथ जो इकोनॉमिक जो लॉसेस होते हैं फैमिली में वो काफी नहीं होती है, उसके साथ अब्यूज भी होता है, अब्यूज हो सकता है और अदर कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं जो फैमिली के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जहां पर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाता है वहां पर किसी भी लेडी को एक अप्रोप्रिएट कोर्ट जाना चाहिए फॉर हर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, there is another part of this question, that is what is the legal right for women to discover a partner to be a smoker। वो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया कि डीवी एक्ट में जो है वहां पर यदि अब्यूज हो रहा है तब हम डीवी एक्ट का हेल्प ले सकते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि अब्यूज नहीं हो रही है मगर स्मोक कर रहा है पार्टनर एंड वी आर सफरिंग इनसाइड आवर होम, we cannot approach to any court, we cannot get any help from as per our existing law. So in that case, there is actually an international law, that is women's right to health is a human right that has been guaranteed through international agreements. The most important human right instrument for women is Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, or CEDAW. Hopefully we all know about this, and India is actually a signatory country to this convention. So notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, state parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the postnatal period, granting free service where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation. ओके, सो ये जो गारंटी, ये जो ह्यूमन राइट है, जब उसको इंश्योर करने की बात होती है तब हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कोई प्रोविजन नहीं है जहां पर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि राइट टू हेल्थ जो वुमेन के लिए है वो किस तरह से होगा जहां पर स्मोकिंग पार्टनर कर रहा है और उसके वजह से उसको हानि पहुंचती है। एक पार्लियामेंट, मैम प्रीवियस को जाएंगे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन एक्ट नेमली सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। इसी के ऊपर जो टीवी पे हमारी एडवर्टाइजमेंट चलती थी जिसके ऊपर कोई भी सीन दिखाया जाता था स्मोकिंग या सिगरेट पैकेट के ऊपर, अभी उसके ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। आप देख रहे होंगे नीचे एक मैसेज भी आता है, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। Okay, so now there was another judgment I would like to bring to all of your attention, that Murli S. Deora versus Union of India and other, that judgment came by Supreme Court of India. It is on 2nd November 2001. That is right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. In this writ petition, Supreme Court recognized the harmful effect of smoking in public places and also the effect on non-smokers who were helpless victims of toxic air pollution caused by smoking. In the absence of statutory provisions at that time, smoking was prohibited in public places such as auditoriums, hospital buildings, health institutions, educational institutions, libraries, court buildings, public offices, public conveyances, including the railways. But the issue is here that no one discusses about the private places such as our home, where because of the single person who is a smoker, that not only the partner but the entire family is affected. Sometimes the young children and the pregnant wife is also affected because of second-hand smoking. So smoking, हमारे country का जो law है उसके regarding smoking in public places fine 200 की है, जो सिर्फ public places के लिए है, not for the home. We will launch a poll question again, and हम हमारे जनता से, हमारे audience से आज ये पूछना चाहेंगे, if a woman is made aware of the hazards of tobacco on her health, which is both mental, emotional and physical, so इससे क्या होगा? क्या divorce rate बढ़ेगा? Domestic violence बढ़ेगा? Use of tobacco would decrease in women? The future generation would be better? क्या ये सारी चीजें होंगी या इनमें से कुछ भी नहीं होगा? वोट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आपको क्या महसूस होता है कि क्या होगा, and then we will take again the opinion of Purnima ma'am about the subject. 30 seconds है आपके पास, quickly आप एक option select करके उसे submit करें. So बहुत से जनों ने ये कहा है, 45% लोगों ने ये कहा है the future generation would be better. All of the above, 29% महिलाओं ने ये कहा है कि सारी चीजें होंगी, और केवल एक ने कहा है कि कुछ भी नहीं होगा.
सो अब मैं दोबारा पूर्णिमा मैम को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि आपका क्या ओपिनियन, आपकी क्या राय है इस सब्जेक्ट मैटर पे? My opinion will be, I would say the use of tobacco amongst men will decrease and definitely the future generation will be better. So उसका रीजन एक मैं देना चाहूंगी कि it is a spouse or partner's responsibility to communicate to each other what is acceptable and what is not. It is also important for every woman to know about the law, about the disease of addiction. It is a partner's responsibility to communicate as clearly as possible about the issue of addiction once they decide for marriage. Okay, so then they can take probably better care of their family. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, आई थिंक दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। आई एम श्योर कि जो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है एंड जो CEDAW लॉ है, आई थिंक उसके बारे में अभी हमारी महिलाओं को जागरूकता मिली होगी एंड दे कैन एक्सरसाइज दोस राइट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कीप देमसेल्व्स सेफ from there. The women who married unknowingly to tobacco addict, there is a question, and I would like to answer because we all know divorce rates काफी सारा जो होता है वो substance abuse के ऊपर भी होता है. Women get married and she comes to know tobacco habit which she did not disclose earlier. What does she do? The question was that. So there are 9 grounds for divorce in section 13(1) of Hindu Marriage Act 1955. Mental cruelty is one of the grounds for divorce or judicial separation. Mental cruelty can be defined as the conduct which inflicts upon the other party such mental pain and suffering as would make it not possible for the party to live with the other. Mental cruelty can be cause of injury to the health of the other party. There is a very recent judgment जो बॉम्बे हाई कोर्ट का है, अभी रिसेंट लास्ट फरवरी में आई है वो, उसमें एक man sought divorce on the ground that his wife has a habit of chewing tobacco. For the court concluded that the allegations were not sufficient to grant decree of divorce on the ground of cruelty. So far there is no such judgment where judicial separation divorce can held only on the basis of partner's habit of use of tobacco or smoking, but court accepted it as a ground. So यहाँ पर ये है जो mental cruelty एक ground होती है divorce के लिए, उसमें जो tobacco और substance use का एक ground हो सकती है, ये कोर्ट ने अभी माना है. तो ये may not be an independent ground for the divorce, but can be one ground for mental cruelty. Right. I think that is very well said, ma'am. कि mental cruelty can be a ground जहाँ पे tobacco use can be a reason of divorce between couples. So I think वो चीज को अगर वो habit की शुरुआत ही ना हो तो divorce का सवाल ही नहीं उठता है. इसके साथ मैं जो है आपको धन्यवाद करना चाहूंगी. सूरज की नई किरणों और सेवा की नई सोच अब नारी के आंचल से फूटना चाहिए. ये शब्द फूटना मैंने इसलिए यूज किया है ताकि इसकी गर्जन, इसकी ध्वनि कोसों दूर तक दिखे, इसकी छवि कोसों दूर तक दिखी जाए. मनुष्य को अब पीड़ा और पतन से अब हमें बचाना चाहिए. नॉर्मली हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं डिजीजेस के, पर जो पीड़ाएं और पतन की तरफ मनुष्य पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ टोबैको यूज एंड दूसरी नशीले पदार्थों की वजह से, उनसे अब हमें उन्हें बचाना है. ले मशाल ज्ञान और कौशल की अब हमें जूझना चाहिए. विद द ICanCaRe ऐप, विद द मार्शल्स प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट, हमें इन तकनीकों को अपना करके आगे बढ़ना है और समाज में तंबाकू को नष्ट करना है. लोक मंगल पथ पर अब हमें चलना चाहिए. कृतंग स्वप्न के तम को अब हमें रोकना चाहिए. आशा और विश्वास की नई ज्योत अब हमें जलानी चाहिए. प्लीज रिमेंबर, वी आर द चेंज एजेंट्स, वी कैन ब्रिंग इन द रेवोल्यूशन. और क्रांति की शुरुआत आज से हम कर चुके हैं. जय हिंद.